Welcome guys to Edutech Smart Classes. In today's video, I am going to clear some doubts from previous comments. This question has been asked by Shrishti Kumari. If a body moves fairly fast, then its motion can be observed easily. But if a body moves very slowly, then it is difficult to observe its motion. Why? बहुत ही धीरे से चलने वाले ऑब्जेक्ट की मोशन को हम लोग क्यों सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं? Let's start the explanation. Whenever there is motion, there is speed. Speed equals to distance divided by time. Now higher speed equals to higher the distance covered in an unit time. Similarly, lower speed equals to small distance covered in an unit time. Now take a look on the motion of this clock's hands. Each of these three hands in the clock got different speed. और इनमें से सेकेंड हैंड का मूवमेंट सबसे फास्ट रहता है बाकी दोनों के हिसाब में. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? लुक ऑन द स्क्रीन. ऊपर वाला पिक्चर में 1 सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस ज़्यादा था, सो इट्स स्पीड इज ऑल्सो हायर. नाउ व्हाई वी कांट ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द आवर हैंड? बिकॉज आवर हैंड कवर्स अ वेरी लिटिल डिस्टेंस इन ईच सेकेंड. और इतना छोटा सा डिस्टेंस हम लोग खाली आँख से ऑब्जर्व नहीं कर पाते. स्क्रीन के मिडिल में एक छोटा सा रे सेगमेंट है. इसका लेंथ को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे खाली आँख से, तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे और तब जाकर उसका जो लेंथ है वो हम लोग देख पाएंगे. अब क्लॉक का जो आवर हैंड होता है वो भी 1 सेकेंड में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करता है. सो इट्स स्पीड इज वेरी स्लो, जो हम लोग खाली आँख से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. So that's why when an object moves very slowly, we can't observe its motion with bare eyes. If you find this video helpful, please press the like button and don't forget to subscribe.